Last time I had told you that we are skipping this topic. This will be covering out today. NAND NOR implementation. This was your practical number 2, I suppose. Fine, but we will be studying proper procedure for this NAND NOR implementation. Okay? See, for we all know that NAND and NOR are universal gates. Till now the circuits which we were implementing, SOB, POS, whatever we were using, AND gate, we were using OR gate, we were using NOT gate. Okay, so we were using AND, OR and NOT gate for implementation of any circuit that we designed till now. Fine, but for practical reasons, NAND and NOR implementation is preferred. Why? Because they are universal gates, and just by using these gates, we will be able to design any circuit that is required. When we talk about NAND and NOR implementation, we can have two different ways for implementing. It is one method is two-level implementation, and the other is multi-level implementation. We'll be studying both these methods, how to implement any circuit using NAND and NOR gates. Okay, two-level implementation. First, we'll be studying two-level implementation. What does two-level implementation means? You have gates at level 1 and you have gates at level 2. Level 2 gates will not be able to work until it gets some output from level 1. Okay, so level 1 में कुछ processing होगा. Whatever output you get from level 1, that is forwarded to level 2, and then you will be getting the final output. So this is known as two-level implementation. And multi-level means you have various levels. First level ka output would be input to the second level. Second ka output would be input to the third level. Okay, so these are the two different methods which we'll be studying right now. Let us first start with two-level implementation. First of all, to implement any circuit with NAND and NOR gates, we should be knowing the logic symbols of those gates, right? If I talk about a NAND gate, how does it look like? Is this the correct symbol for NAND gate? Yes, this is my NAND gate. You write over here X, Y, and you will be getting over here, क्या मिलेगा? X dot Y का dash. Right, so this is my NAND gate. In NAND gate is opposite of AND gate. When I provide two inputs, I'll be getting X dot Y ka complement. All of us know De Morgan's theorem. What does X dot Y whole dash mean? Can anyone tell me? X dash plus Y dash, right? Can I write like this? So if I use this, OR gate, this is an OR gate. What does this circle mean? Circle means what? Can anyone tell me what does the circle over here means? Not. Okay. Can I write like this? What does this mean? What is going inside this gate? X dash. What is this? Y dash. और इन दोनों का not, sorry, इन दोनों का और, is this same as my NAND gate? Yes or no? इसमें क्या गया? X dash, इसमें गया Y dash. Okay. And this is my OR gate. So is this X dash plus Y dash? And we know that X dash plus Y dash is nothing but X dot Y whole dash. So can I consider this as a symbol of NAND gate? Can I consider this as a symbol of NAND gate? Yes. This symbol is known as AND invert. ये AND गेट है और इसके आगे मैंने एक इन्वर्ट लगाया. So this is AND invert. और इसको क्या कहेंगे? पहले मेरे इन्वर्ट है. This is invert. And then I have OR. So NAND gate is also represented using these two symbols. Okay. These are the two different graphic symbols for NAND gate. Similarly, for NOR gate, let us talk about NOR gate. NOR gate को कैसे represent करते हैं? This is NOR. Here X plus Y whole dash.
What is x plus y whole dash? It is nothing but x dash dot y dash. Can I write it like this? This is x dash, this is y dash, और इनका मुझे क्या करना है? And right? So this is a graphic symbol, the graphic symbol for NOR. फर्स्ट वाले को क्या कहेंगे हम? और invert, and the second one is invert and. Or x plus y whole dash. Fine. So these are the symbols which are used to represent NAND and NOR gates. If I talk about NOT gate, NOT can be used like this. This is a NOT gate. All of us know this, right? Can I use the same gate like this? Will I get x dash over here? हम इसको merge कर देंगे ऐसे, ठीक है? Can I use the same gate for NOR? तो भी मुझे x dash मिलेगा. Fine. So all these are your graphic symbols for inverter. I can use any gate, any of these gates, and what would it work as? It would work as inverter. Clear? Are these concepts clear? NAND can be represented as AND invert or invert OR. NOR can be represented as OR invert or invert AND. Okay? And both these gates can be used for inverting purpose. Now let us see how to implement any circuit, any equation given to us just by using NAND gates. पहले NAND देखते हैं, फिर NOR देखते हैं, ठीक है? चलो, I'll give you one function first. Let us implement this function AB plus CD plus E. First step, let us design the circuit for this function. Right? AB. This is CD. And this is E. और इन तीनों का क्या है? इन तीनों का OR है. Is the circuit correct? AB plus CD plus E is F. Now let us see what. ध्यान से देखना, what am I doing? Will it make any changes to my circuit? दो जगह invert. Invert means cancel out हो जाएगा. Right? अगर मैं ये एक बनाती हूँ, this is A dash. और वापस उसका मैं अगर invert करूँ तो मुझे A मिलेगा इधर. Similarly, if I place two circles over here, will it make any difference? No. अगर एक लगाया तो yes, it is going to make difference. It is, the circuit will not remain the same. But if I place two circles over here, it will not make any difference, right? अब अगर मुझे यहाँ पे भी एक सर्कल लगाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? E क्या बन जाएगा? E will become E dash. Clear? Now, what is this gate? What is this representation? Invert OR. What is invert OR? Invert OR is also treated as NAND gate. Fine. So can I treat the same circuit like this? AB, CD, E dash. This is E dash, okay. But E dash को मैं एक और gate से लिख दूँ? Can I write E dash as like this? AB, CD, E dash की जगह मैंने क्या कर दिया? I placed one NAND gate over here. Okay. अब देखो. Instead of this invert OR symbol, I'll be using AND invert symbol. हो गई मेरी circuit? Is this the NAND implementation of the circuit that was given to me? Was it easy? Did you all understand?
How did we get this circuit? सबको पता चला? सबसे पहले मैंने क्या किया? I placed two circles on the same line. Two circles on the same line will not affect my output. Okay? अब यहाँ पे एक सर्कल आ गया तो ये तो NAND गेट बन ही गया. But in this case, last वाली लाइन में I was not able to place two circles. So what did I do? एक सर्कल इधर रखा और E को E डैश बना दिया. तो कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट अगेन इट वुड रिजल्ट इनटू द सेम आउटपुट. मैम मतलब 2 बार नॉट गेट लगाना है? 2 बार नॉट गेट नहीं, एक लाइन पे 2 नॉट गेट लगाओ तो योर इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो यहाँ पे मैंने नॉट लगाया, इधर नॉट लगाया, बट ई डैश को मैं वी स्टडीड कि इस दिस थिंग कैन आल्सो, दिस इज ई डैश. We studied that E dash can also be implemented using a NAND gate directly like this. इसलिए मैंने यहाँ पे E की जगह E dash की जगह क्या बना दिया? I placed a NAND gate over here. Right? Now, so this is the circuit for which equation AB plus CD plus E. F equals to AB plus CD plus E. For this equation, this is its NAND implementation. Similarly, for any type of equations that you get, you will be getting the circuit in this way. So from this, what we can conclude is, if you want to design NAND implementation of any equation given to you, first thing is simplify the function and express it in the form of sum of products. हमें जो ये मिला था AB plus CD plus E, what was it? It was in the form of sum of products. ठीक है? तो first of all क्या करोगे आप? सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो. अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सम मिला है तो उसको भी चेंज करके सम ऑफ प्रोडक्ट बना दो. फाइन. सेकेंड स्टेप इज ड्रॉ अ NAND गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ. Draw a NAND gate for each product term. This is a product term. This is a product term. This itself is a product term. तो सभी के लिए एक एक NAND gate बना दो. ये AB है, ये CD. ठीक है, अभी E का मैं बताती हूँ सिंगल लिटरल के लिए क्या. Draw a NAND gate for each product term of the function that has at least 2 literals. ये 2 literal वालों के लिए करने को बोला है. ठीक है. This constitutes a group of first level gates. ये जो gates आपके आए ये क्या है? फर्स्ट लेवल पे होंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ सिंगल NAND gate in the second level with inputs coming from outputs of first level. यानी फर्स्ट लेवल में से जितने आउटपुट आ रहे हैं उसके लिए एक और सिंगल NAND गेट बनाओ एट द सेकेंड लेवल. ठीक है. Smith is asking at least 2 literals or only 2 literals? At least 2 literals. If you have 3 literals, तो यहाँ पे एक और डाल दो. ठीक है. So second level पे third step is on the second level place one more NAND gate such that output of first level should be input to your second level NAND gate. Fine. And last step is a term with single literal. ऐसी कोई टर्म जिसमें आपके पास है अगर आपके फंक्शन में which has a single literal, it requires an inverter in the first level. उसको फर्स्ट लेवल पे एक इन्वर्टर दे दो. ठीक है, यानी E को फर्स्ट लेवल पे एक इन्वर्टर दे दो. और मे बी कॉम्प्लीमेंटेड एंड अप्लाइड एज इनपुट टू द सेकेंड लेवल. यानी यहाँ पे आप either you provide a NAND gate to that single literal term and then place it to your NAND gate at the second level, or what you can do is इस पूरे की जगह सीधा E dash लिख दो. ठीक है, but we will prefer this so that it looks uniform. Instead of changing the term, we will be placing a NAND gate. Did you understand the procedure? अब कोई भी आपको कोई भी function ना दिया हो, all you have to do is follow the same procedure. Your function should be in SOP form. अगर ऐसा है ABC plus A dash B plus CD. ठीक है, implement it using NAND gates. तो क्या करोगे? First of all, how many terms you have? 3 product terms. तो A, B, C. ठीक है.
फिर अभी assuming that complemented as well as normal inputs are allowed, तो यहाँ पे a dash b and third cd, those would be your first level gates connected to one more NAND gate at the second level, and this is your two level NAND implementation. मल्टी लेवल में वी विल सी दैट मल्टीपल इनपुट्स को हम अवॉइड करेंगे. ठीक है, मल्टी लेवल गेट्स का अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, बट अभी दिस इज हाउ टू इम्प्लीमेंट अ टू लेवल NAND implementation. Did you understand, all of you? Any doubt in this? Now, next let us see NOR implementation. I'm giving you one function, and first of all we will see how to implement it using NOR. So सबसे पहले let us follow our simple procedure that we do. How to design this function, how to design a circuit for this function. A plus B, C plus D, और इन सब का आपको एंड करना है. ठीक है, यहाँ पे यू हैव E. This much all of us know, right? We know how to design a function given to us using circuit. How to design a circuit for the given function. Ab, let us follow the same procedure. If I place a circle over here, a circle over here, it won't affect my circuit. It won't affect the output. यहाँ पे E dash करो और इधर सर्कल लगाओ. Now ये दोनों कौन से गेट बन गए? NOR बन गए. And what is this invert AND? Invert AND is NOR. Okay, so what would the circuit finally look like? E के लिए let us introduce one more OR gate because we know that these gates would work as inverters. Second level पे let us replace this symbol by NOR symbol, which we know. So this is your NOR implementation. पता चला? Did you all understand? Okay, so if you want to derive a common method for it, for designing any circuit using NOR gates, what should your function be in? Which form should your function be in? Yes, your function should be in POS form. POS. अगर POS फॉर्म में नहीं है तो आप इस तरह से नहीं बना पाओगे. ठीक है, ऊपर वाला जो फंक्शन हमने देखा, फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म वी वर प्लेसिंग अ NAND गेट, और यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर ईच sum term we will be placing a NOR gate. Okay, let us see the procedure. Chalo, I'll give you. So first thing is, only difference is what you have to do. First convert your function to POS form, and then for each max term or each sum term, what you have to do is place a NOR gate at the first level. Output of the first level would be connected, would be provided as an input to the second level NOR gate. Okay, and that is how you will be able to convert your function, your circuit, to its equivalent NOR implementation. Now I'll give you one equation and then we will see how to implement it using NOR. Take a fresh page. Okay, see the same thing. F of x, y, z equals to sigma 0, 6. Now you are given like this, and you are asked to implement it using. So first of all, let us implement this using NAND gates, and then we will be implementing it using NOR gates. Okay. तो सबसे पहले क्या करेंगे? We will be simplifying the function. It's a 3 variable function.
Place a 1 at 0th position and at 6th position. ठीक है. अब is any grouping possible? पहले एसओपी में फाइंड कर देते हैं. ठीक है. Any grouping possible? Yes or no? सो गए सब. No grouping possible. दोनों diagonally है. I cannot group these two ones together. So what would be my f? My f would be x dash, y dash, z dash, individual one, और यहाँ पे plus x, y, z dash. तो ये मेरा SOP हो गया. ठीक है. So this I'll be using for my NAND implementation. साथ में ही let me find POS as well. POS के लिए क्या करोगे? Place zeros. चलो, now tell me one group. Whatever I'll be finding is f dash. What is common in this group? Z. Okay. What is common in this one? ये जीरो को इसके साथ कंबाइन किया. Y. x dash तो है ही. Y and X. X dash y. Okay. And last one, this one. x तो कॉमन है ही और ऊपर में से y dash. Y dash. Okay, so this is my f dash. अब हमें क्या करना है? We want to make it POS. So f is what? Z dash. ठीक है. Z dash plus will become dot x plus y dash dot x dash plus y. Complement of f. This is how you find complement of f. Okay. चलो इतना हो गया. Now this thing I'll be using for NOR implementation and this I'll be using for NAND implementation. So let us quickly write design the circuit. NAND का क्या होगा? 1 2 3 आपका जो था x dash y dash z dash first level NAND gate. Second level में you had x y and z dash, that is your second level NAND gate. Sorry, this is first level NAND gate and second level में एक और डाल दो. So this is your NAND implementation. Any doubt in this? Any doubt in this? Okay. Now No, see, ma'am. you can also implement. देखो इसको पहले मैं NOR implementation करने से पहले let me explain this thing to you as well. If you implement this circuit using NAND, तो कैसा बनेगा? You will have like this x dash y, x y dash, and you have z. तो z के लिए मैं एक इधर डाल देती हूँ और इन तीनों को सेकेंड लेवल NAND गेट. But what you will be getting over here is you will be getting f dash. ठीक है. अब इसको अगर मैं कॉम्प्लीमेंट करूं तो I'll be getting f. This is also allowed. ठीक है. If you are asked to implement this f dash using NAND gate, तो कैसे करोगे? पहले f find कर लो. यहाँ से जो f मिला आपको from the second level NAND gate, if you place a third level gate over here, you will be getting f. So if you are asked to implement the same thing here, if you are asked to implement this f dash and f both in the same using NAND gate, you have to do it like this. ठीक है. थर्ड लेवल करोगे तो आपको वापस f मिल जाएगा. Now let us implement this one using NOR. It's simple. Our function is in POS form. ठीक है. मैं वापस एक बार नीचे फंक्शन लिख देती हूँ. x plus y dash, x dash plus y. Okay. And last one is z dash. So if my function is this, f equals to x plus y dash, x dash plus y, और क्या था? z dash. Yes. Now let us implement it using NOR gate. x y dash इधर first level पे एक NOR, second level पे एक NOR,
नहीं, आई एम कॉलिंग इट सेकेंड लेवल, सॉरी, फर्स्ट लेवल ओनली. एंड आई हैव जेड, जेड डैश, उसका भी एक. ठीक है, एंड ऑल थ्री विल गो to a second level NOR gate, and this would be your F. Understood? Yes or no? So we have implemented, it should be Z, right? No, it should not be Z. It should be Z dash only. Why? ये Z dash है, इधर कॉम्प्लीमेंट हुआ, इधर वापस कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो Z ही बन जाएगा ना. अगर आपको Z रखना है, if you want to place a Z over here, then you have to remove this. Fine. रिकॉल आगे मैंने जो आपको सिखाया, अगर आप z डैश है आपका, इसका नॉट करते हो तभी आप इधर नॉट रख पाओगे. क्लियर पर स्मिथ? मैम हम लोग इसमें हाँ बोलो. मैम इसमें हम लोग x प्लस वाई डैश इंटू एक्स वाई सॉरी एक्स डैश प्लस वाई कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जो फाइनल वाला जो गेट आपने बनाया जिसमें आउटपुट एफ आ रहा है, तो उसमें एंड नहीं आना चाहिए. एंड क्यों आएगा? लाइक ये पीओएस है ना, बेटा तो फिर तुम इसमें वापस गोइंग टू स्टेप 1. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी फंक्शन इन यूजिंग नॉर इम्प्लीमेंटेशन. अगर आपको एंड गेट रखना है तो कर ही सकते हो ना, आप इस तरह से करोगे. यू विल प्लेस ओवर हियर लाइक दिस, यू विल प्लेस और गेट फॉर और एंड का कॉम्बिनेशन होगा वो, नॉर का नहीं. यहाँ पे मैंने नॉर रखा तो वो तो आपने कहा कि नहीं, कि इधर नॉर क्यों रखा, आपने कहा इधर एंड आना चाहिए, तो ये वाला नहीं देखा आपने. अगर हम एंड और यूज करते हैं तो इधर एंड आएगा, इधर और आएगा. यू आर आस्किंग मी टू रिपीट द एंटायर प्रोसेस अगेन. ये एक्स डैश हुआ, ये नहीं वाला मैम बाय. क्या, और यहाँ पे अगर एंड आया तो फिर हमने उसके बाद ये किया, ये किया, इसलिए हमारा लास्ट में from this we move to this circuit. Understood? Tilak? Similarly here also, if you are asked to find, you can find both f and f dash. अगर थर्ड लेवल गेट डाल दोगे तो वहां पे आप f dash फाइंड कर पाओगे. Here this is your f, but if you place one more NOR gate over here, this would become your f dash. ठीक है, तो ये वापस आपका एसओपी वाला फॉर्म आ जाएगा, ये आपका पीओएस था. ठीक है, so this is how you implement any function using two-level NAND implementation. Now let us discuss about multi-level. All of us know how to implement AND gate using how to implement AND using NAND. ये सब आपने किया हुआ है, and or you have implemented all the basic gates using AND or using NAND and NOR, right? Let me show you multi-level concept. चलो, first of all, you know how to implement AND using NAND. कैसे करेंगे? Did we do this earlier? अगर यहाँ पे A है तो इधर मुझे क्या मिलेगा? A नहीं, हमें दो वेरिएबल्स लेने हैं, A B. Okay, so this is A B dash, or again if I take a complement of it, I'll be getting what? A B. First complement will give me A B dash. This is NAND gate. दूसरी बार NAND लगाओ तो again what would happen? This is A B dash का भी dash, right? So it is A B. This is how we implement AND gate. और को कैसे implement करते हो? Recall your practical number 2.
This is how you implemented OR using NAND. Yes or no? इस तरह से किया था. This is A dash, this is B dash. और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? A dash plus B dash whole dash. Sorry, A dash dot B dash whole dash. यहाँ पे NAND है ना. Input 1, input 2, उनका AND का dash. So what is this equal to? This is equal to A plus B. So we know how to implement AND using NAND. We know how to implement OR using NAND. We also know how to implement not using NAND. Not को कैसे करेंगे? Simply place an AND gate. तो ये not हो गया. इधर A है तो इधर A dash होगा. Right? So these three circuits are fit in our mind. Two NAND gates in sequence will give you AND. This 3 wala would give you OR and this would give you NOT. Now, if this much is clear, we will be able to design any circuit using NAND gates. Multi-level implementation, okay? Chalo, now I'll show you how to do that. First of all, let us take the equation. Not be able to complete it. Let me first write the equation. F equals to suppose this equation is given to you, right? And you are asked to implement this using just NAND gates. First of all, what we will do is we will design this in the way which we know. Like हमें सिर्फ AND OR का वो पता है, हम उस हिसाब से ये सर्किट बना देंगे. ठीक है? First of all, brackets. So CD AND gate. उसका OR करना है किसके साथ? B के साथ. चलो यहाँ से B ले लो और OR करो. ठीक है? So this is my this is my B plus CD. यहाँ पे this output is B plus CD. इसको मुझे क्या करना है? A के साथ AND करना है. Okay, so whatever output I get over here, I'll be ANDing it with A. इतना clear? And this is second term B plus C dash. अभी मैं यहाँ पे criss cross नहीं कर रही हूँ. I am writing it like this, but you will be designing single B for the entire circuit. Okay, this is B C dash, and this is to be ORed with this term. And this would be your F. Right? Now, what we will be doing is, this is the basic circuit which every one of you would be able to design from the given equation. It's a simple circuit just by using AND and OR. Here we are assuming that complemented inputs are allowed. Okay? No need to take NOT gate. You can directly provide complemented input. Now, next is what? Next step is replace each AND OR gate with the block diagram, with its equivalent block. यानी AND को आप किसके थ्रू रिप्रेजेंट करोगे? दो NAND के थ्रू. ठीक है? इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? Using 3 gates which we have studied. Let me draw it here only. यहाँ पे एक NAND था, इसकी जगह देखो मैं क्या कर रही हूँ. एक AND था, AND की जगह मैंने दो NAND डाल दिए. Did you understand this? So this is replacement of AND. यहाँ पे OR है, तो इसकी जगह मैं देखो OR डाल दूंगी. ठीक है? ये OR को मैं रिप्लेस कर रही हूँ. How do you replace this OR? You will place one NAND gate, another NAND gate. इन दोनों का आउटपुट जो आएगा वो तीसरे NAND गेट में और इधर. So this is my representation of OR. ये NAND हुआ, सॉरी ये AND का रिप्रेजेंटेशन था, ये OR का हुआ. ठीक है? अब वहां पे से एक AND आया. So what I'll do is again place 2 NAND gates over here. इधर एक AND है तो उसकी जगह क्या कर दो? 2 NAND गेट डाल दो.
ठीक है, यहाँ पे और है, और को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3 गेट्स। सो फर्स्ट स्टेप इज डन। व्हाट डिड वी डू? हमने जितने एंड थे, एंड को एंड के डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, और को और वाले रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट किया। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, इफ यू फाइंड टू NAND gates, we have studied this, we know this कि एक NAND के बाद दूसरा NAND आता है अगर ऐसा, this is not, this is not, okay, so this will give me A only, यहाँ पे A dash हुआ और वापस A, so ये दोनों NAND gates को हम remove कर सकते हैं, yes or no? If I have two NAND gates in sequence, I can eliminate those two gates so that I'll be getting the same output. So can you see gates over here which can be removed? अब मैं ये रब कर रही हूँ तो आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। Can you see any gates on the same line? Two gates on the same line, which can be eliminated? Yes. Which one? This and this. Both of them are on the same line. See. अगर दो बार ये रखो उसकी जगह उसको निकाल दो तो will it work? Yes, it will work. Similarly, can you see? And yes, it should have single input. हाँ, वरना आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक और गेट है. This one and this one are on the same line. Yes. अब इसके पास दो इनपुट है, यहाँ पे सिंगल है, इधर भी एक सिंगल है. कैन आई रिमूव दिस? अब कोई बचा नहीं. ओके, सो नाउ आई विल नीड दिस गेट, दिस गेट, दिस वन. यहाँ पे एक रखते हैं, ठीक है, इन दोनों को रखते हैं. दिस इज सपोज 3, दिस इज 4, दिस वुड बी माय 5, this is my 6. Itne gates compulsory are required. We removed all the unnecessary gates. Okay. Now from this, let me design a better circuit. CD first gate required. उसको कनेक्ट किस में करना है? ये वाले गेट में. ठीक है. अब यहाँ पे एक गेट है, उसकी जगह इधर B को मैं B डैश बना दूं तो एक और गेट कम हो गया मेरा. अब where will this go into? It will go into gate number 5. ठीक है. ये A कहाँ जाएगा? ये A और ये दोनों जाएंगे गेट नंबर 5 में. Now let us look at this B dash and B and C dash. I made very bad circuit. I know. B and C dash एक ही गेट, सेकेंड वाला रिमूव कर दिया मैंने, और ये कहाँ जाएगा? लास्ट वाले गेट में, 6 वाले गेट में. 5 वाला भी कहाँ जाएगा? 6 में. ओके, सो हियर दिस इज हाउ, this is your final implementation of NAND implementation of the circuit of the equation which I had given you. Did you understand the procedure? All of you? This is known as block diagram method. First, only thing is ध्यान से करना है बस. You know how to represent AND using NAND. You know how to represent OR using NAND. तो आपको आपके बेसिक डायग्राम जो आप बनाते हो नॉर्मल सर्किट, उसमें जहां पे भी एंड दिखे वहां पे पहले क्या कर दो? 2 NAND डाल दो. जहां और दिखे वहां क्या करोगे? इस फॉर्म में 3 NAND डाल दो. ठीक है. एंड देन in the second step, if you have 2 NAND gates in the same line, just eliminate them. And finally, you will be getting this type of circuit. So this method, multi-level implementation. देखो multi-level क्यों? इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा. Okay, so this is a multi-level circuit, multi-level implementation of NAND.
I'm giving you one more equation. Just try it out at your end. Ma'am, we have to take only one input for B, or we can have many numbers of input of B while implement. Yes, you can have many numbers. अभी इस मेथड हम जो सीख रहे हैं उसमें यू कैन यहाँ पे B है तो आप नीचे भी B प्रोवाइड कर सकते हो. ठीक है, आप कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो. कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट्स आर ऑल्सो अलाउड. ओके, सो दिस वुड बी योर होमवर्क. आपको एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा? हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ NAND गेट्स आर रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट दिस सर्किट. इसलिए कल ये इम्प्लीमेंट करना और मुझे बताना हाउ मेनी गेट्स डू यू फाइनली रिक्वायर टू इम्प्लीमेंट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. ओके, कैरी इट आउट यूजिंग NAND इम्प्लीमेंटेशन जैसा अभी मैंने आपको सिखाया. B डैश तो डायरेक्ट अलाउड, नो नीड टू प्लेस नॉट गेट. ओनली थिंग इज जहाँ प्लस है वहां पे और रखो, डॉट है वहां एंड